Welcome once again with the question of accounting ratios. In this video we are going to discuss the accounting ratio question which has appeared in the paper of 2010 Punjab University, and let's start the question. So question is that the following balances are extracted from the accounting records of ABC Limited. Required, calculate the following ratios. Number 1, debt to equity ratio, fixed assets ratio, proprietary ratio, current ratio, liquidity ratio. These two ratios are already discussed in the previous question, and now we are going to discuss these three new ratios. So here are balances given: share capital 500,000, long-term liabilities 250,000, current liabilities 250,000, fixed assets 600,000, financial charges 10,000, liquid assets 300,000, sales 900,000, and purchases 600,000. So let's start to calculate first debt to equity ratio. So first of all, debt to equity ratio is equals to total debts divided by equity. So here your total debts are equals to long-term liabilities divided by add current liabilities. So your long-term liabilities are 250,000 and your current liabilities are 250,000. So total debts are 500,000, and that is also your equity. So simply divide these two. First of all, long-term liabilities, here you are seeing that long-term liabilities are 250,000 and current liabilities are 250,000. So total debts are 500,000, and equity is already given here, that share capital, and that is 500,000. So simply it is equals to 1:1. Second ratio is fixed assets ratio, which is equals to fixed assets divided by long-term funds, and your fixed assets are equal to, those are given in the question, fixed assets are equal to 600,000, and your long-term funds, here the working of calculation of long-term funds are given here. First of all, your share capital which is given in the question 500,000 and long-term liabilities 250,000. So total your long-term funds are 750,000, क्योंकि ये फंड्स आपने एक लंबे अरसे के लिए ये एक्वायर किए हुए हैं, और दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म फंड्स. तो ये है टोटल 750,000. सो सिंपली इनको डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.8:1. Third ratio is proprietary ratio. Proprietary ratio is equals to shareholders fund divided by total assets. So shareholders fund is equals to share capital, that is equals to 500,000, and total assets are 900,000. So total assets, calculation of total assets are given here. Liquid assets divided by add fixed assets, and the sum of these two is called long-term funds, or you can say total assets. So total assets are 900,000, so 500,000 divided by 900,000, and answer is 0.55:1. Current ratio, as we discussed in the previous question, that it is equals to current assets divided by current liabilities. So what are your current assets? Current assets, these are current liabilities, and these are 250,000, and your current assets, share capital is not your asset, long-term liability is not your asset, fixed assets are not your current assets, purchases, sales, these are not your current assets. So only liquid assets are given here, 300,000. So ये ही आपके current assets कहलाएंगे. तो करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, सो आंसर आपका आ गया 1.2:1. अब आ जाए जी लिक्विडिटी रेशियो. तो लिक्विड
एसेट्स का क्या फार्मूला है। वैसे तो इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन है लिक्विड एसेट्स, लेकिन लिक्विड एसेट्स अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था कि किसके बराबर होते हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, बट हियर इन दिस क्वेश्चन लिक्विड एसेट्स आर डायरेक्टली गिवन 300,000, so there is no need to calculate liquid assets, only 300,000 divided by current liabilities 250,000 and answer is 1.2:1। तो इन क्वेश्चंस को, इन रेशियोज को समझना, इनकी प्रैक्टिस करना, वो तो बाकी तो प्रैक्टिस तक है, आपकी कितनी प्रैक्टिस है ये तो आपने डिसाइड करना है, लेकिन इन क्वेश्चंस को समझना बहुत आसान है। करंट एसेट्स को अगर आप देखें तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज है, लिक्विडिटी रेशियो जो है वो आपकी लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज है, और इसी तरह जो इधर अभी कुछ नई आई हैं इनके भी फार्मूलाज आप साथ साथ देखते जाएं और इनको याद करते जाएं। बाकी प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस विदाउट अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग। अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के ये रेशियोज आप क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, रेशियोज की मदद से आप क्या देखते हैं, तो ये समझने के साथ साथ अगर आप फार्मूलाज को अगर आप याद करते हैं और इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। सो स्टे टच्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड द अदर पर्सन्स अराउंड यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।